Now we move on to one of the most anticipated segments of our seminar, the panel discussion. I request all our honorable resource persons to kindly come forward and take their seats on the dais. Now to lead and guide this engaging panel discussion, I would like to invite our IQAC coordinator, Dr. Manu Chadda. Thank you, Dr. Manu. Good afternoon, everyone. Once again, I welcome you all to this thought-provoking panel discussion on Sardar Patel's vision in shaping Indian higher education for the 21st century. Let me introduce you all to our esteemed panelists, Dr. Rakesh Babaji, Dr. Professor Latika Ma'amji, Dr. Varun Goelji, Dr. Jaspal Singh ji, and Dr. Pargat Singh Garcha. Patel emphasized education that fosters integrity, self-reliance, and service to the nation. I also welcome Professor Mansingh Turji for the panel discussion, sir. Latika ma'am, you were just talking to me about a value-added course that's probably going to be approved today. So ma'am, in context to that, plus today's seminar, how do you think our universities are aligning, they're aligning the curriculum and the pedagogy with the values as imbibed, as needed through NEP or even through Patel, Sardar Patel's vision? Thank you for your thought-provoking question. Yes, your concern about value education at higher education level is very genuine, because just like how we use language, the language skills which the students have at school level are much better than the language skills which college students have. This has been an observation. And similarly, in their growing years, students have taken a lot of interest in what is right and what is wrong. And as soon as they reach the higher education institution, the free environment and influence of each other and the openness which they observe and which they experience over there sometimes is not conducive to retaining of values, I would say. So in such an atmosphere, when they have to take decisions, when they have to work in teams, it is very important that social emotional learning is part of the curriculum. Social emotional learning is, we can say, is emotional learning, motivation, and social intelligence in its new avatar, in its in the current research and pedagogy context. The main focus is that somewhere in this race for me, mine, and myself, empathy and kindness are getting lost. So, दूसरे के लिए भी सोचना, अपने को दूसरे की जगह रखकर डिसीजन लेना, तोल कर बात करना, ये ऐसे ही कुछ जो ज़रूरी चीज़ें जो पहले टेकन फॉर ग्रांटेड ली जाती थी, उसको सिखाने का समय आ गया. जैसे कि कोठारी कमीशन के बाद 2000 में, 2020 में, 2020 में जो हमारे बड़े टीचर्स थे, उन्होंने कहना शुरू किया कि क्या ऐसा समय आ गया कि शिक्षा और वैल्यूज को अलग-अलग देखा जाएगा, कि आपको जो शिक्षा ले रहे हैं वो वैल्यूहीन है, इसलिए वैल्यू एजुकेशन देना उनको ज़रूरी है. तो समय कुछ ऐसा आ गया कि जो चीज़ें इनफॉर्मली परिवार से, समाज से, बड़ों से मिल रही थी, उसके अंदर जो एक विकृति आ गई, उसके अंदर सेंसेशनलाइजेशन को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा, बजाय कि पेशेंस को, फोर्टिट्यूड को, रिस्पेक्ट को, ग्रैटिट्यूड को,
उसके अंदर एम्पैथी कम होती गई, हमें क्या लेना देना, इंडिफरेंस बढ़ता गया। तो ऐसे में इंडिफरेंस इस हद का बढ़ गया कि आज हमें वो यूएन में भी नजर आ रहा है कि यूएन ने जो काम करना था वो हो ही नहीं रहा है। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब वॉर्स आर गोइंग ऑन, inhumanity at its peak, and we can continue to lead our normal lives. So in a class of multicultural students, an Iranian suddenly breaks down, Serbian student suddenly breaks down ki you are celebrating everything, what about us? You ask a very casual question, छुट्टियों में क्या किया? हमने कोशिश करी कि हम अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट कर सकें, हमें उनके सही होने का संदेशा मिल जाए कि वो ठीक है, उनके घरों पे बॉम्ब नहीं गिरा। इस तरह के सिचुएशंस जब आप विजुअलाइज भी करते हो तो आपको समझ में आता है कि हम इनह्यूमैनिटी की किस कगार पे खड़े हैं। सो ऐसे समय में दोबारा से ये यूनेस्को का कोर्स है सोशल इमोशनल लर्निंग फ्रॉम नॉलेज टू प्रैक्टिस, जो हम एक वैक की तरह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ये एक अटेम्प्ट है जो बाहर से आ रहा है। हमारे अंदर हमारे जो अपने अटेम्प्ट्स थे वो थे कहानियां सुनाने के, चाहे वो हितोपदेश की थी या पंचतंत्र की थी, स्टोरी टेलिंग, जो हमारे गुरुओं की जीवन की कथाएं हैं, जो हमारे समाज में किसी ठग की, किसी लालची सेठ की, किसी बड़े चतुर सियार की, ऐसी जो भी कहानियां चलती थी उसके अंदर भी जो सीख होती थी वो चीजें हमारे मुहावरों में आ गई थी। आजकल हम में से कितने लोग हैं जो मुहावरे यूज करते हैं बात करते हुए भी, शायद ही कोई 2 मुहावरे हमें याद हो जो हमने पिछले 10-20 दिनों में यूज किए हो। तो उन मुहावरों में भी क्या क्या छुपा हुआ था, वो सारे जो जीवन मूल्य हैं जो गुम हो रहे हैं उनको पकड़ने की जरूरत है। So, ma'am, regarding this, Thank you so much. I hope that we get more courses on Yes, this thing. thank you so much. Very well taken. And I hope my students could get the answer that was much required for everybody because you are the forthcoming teachers. Rakesh Baba, sir. So you talked about holistic education. Earlier, like as school children, when we were small, we started diverse curriculum. Then there came a tagline called as STEM. Now a new tagline that is STEAM. And NEP is also focusing on multidisciplinary education. And besides that, you also talked about you and ma'am both talked about Indian knowledge system or the indigenous knowledge system. So my question here is for that how do you see multidisciplinary learning and Indian knowledge system contributing to Vallabhbhai Patel's inspired academic work? So kindly be a little brief in answering. Yes, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you. Multidisciplinary approach, what we mean basically is that till now, Yes, in sir. modern India, the education system, though I don't belong to the education field, is totally compartmentalized. Yes. If a student is studying non-medical, he's only well versed with physics, chemistry, and maths. Yes. If he's in the medical stream, maths की जगह bio हो जाएगा, बाकी तो बिल्कुल सर। होगा नहीं। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये सेटअप बना दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, जेई क्लियर करना है, तो ये आपको एक सेट लेना है, तभी आप क्लियर कर पाओगे। लेकिन उससे होता क्या है कि वो जो 2 साल होते हैं ना 11th और 12th के, तो बच्चा इतना ज्यादा एनग्रॉस उन्हीं सब्जेक्ट्स में हो जाता है कि एक फोकस होता है कि मुझे जेई क्लियर करना है, मुझे बिट सेट क्लियर करना है, और मेडिकल वालों को हो गया कि मुझे नीट क्लियर करना है। तो वहां पर वो स्कोप उसका खत्म हो जाता है कि वो कोई अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट एज अ माइनर पढ़ सके। जबकि हर एक बच्चे का, मैं मान ही नहीं सकता कि किसी स्टूडेंट का ना होता हो, हर एक का इंटरेस्ट कुछ ना कुछ होता है। किसी का फोटोग्राफी होगा, किसी का म्यूजिक होगा, किसी का हिस्ट्री होगा, किसी का फिलोसॉफी होगा, लेकिन जब वो इस तरह की रेस में जुड़ता है ना, वो सब्जेक्ट्स नहीं होते। बट एनईपी हैज स्टार्टेड, या जो उनका ड्रीम है, जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, इस तरह के माइनर सब्जेक्ट्स को उन्होंने जोड़ा है, उसमें स्कूल लेवल से जोड़ रहे हैं। वो ऑनवर्ड 6 ऑनवर्ड्स को स्टार्ट कर रहे हैं कि आप ऐसे कोर्सेज को जोड़ें।
और उससे होगा क्या, जो मेरा मानना है बेसिकली, कि अपनी वो एक बहुत ज्यादा जो ग्रूलिंग शेड्यूल है ना एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, वो कई बार एक स्टूडेंट को डिप्रेस करता है। लेकिन ये सब्जेक्ट्स जुड़ेंगे जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होंगे अभी चाहे, लेकिन वो उस डिप्रेशन से बचेगा, उसके एक पर्सनैलिटी डेवलप होने के चांस ज्यादा है, चाहे वो नीट क्लियर करे चाहे ना करे, चाहे वो जेई क्लियर करे चाहे ना करे। और इस तरह से ये होलिस्टिक एजुकेशन का कोई एक फैक्टर नहीं है, कोई एक कंपार्टमेंट नहीं है। इस तरह ही होलिस्टिक एजुकेशन की बात जो है पहले भी की जाती थी, लेकिन आई एम अफ्रेड कि उसको प्रैक्टिकल अप्रोच में डालने की कोशिश नहीं की गई। मेरा ये भी मानना है कि चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस आते हैं कि फॉर एग्जांपल जहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, कई बार वहाँ पे किसी टीचर का वर्कलोड ही इतना है कि वो उस बच्चे को फोटोग्राफी या फिलोसफी या म्यूजिक ना पढ़ा पाए, तो यू हैव टू एंगेज द टीचर्स। आपको अपॉइंटमेंट्स तो करनी ही पड़ेंगी, हवा में ये बातें नहीं होंगी, लेकिन ये बातें अगर धरातल पे आ जाए तो बहुत अच्छा। सर थोड़ा सा शायद नीट या जेई वाले भी कुछ थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी कर देंगे तो बच्चे मन से भी करेंगे। मेरा भी वही कहना है ना कि एक तो शायद अभी पीछे जो मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड कि पिछले 10 साल के जेई और नीट एग्जाम किस प्रकार से आए हैं, क्या वो 12th के सिलेबस के बिल्कुल अनुरूप है या कोचिंग वालों के सिलेबस के अनुरूप है, बिकॉज दे वांट कि इन पे शिकंजा कसा जाए। और मेरा खुद का मानना है कि इन पे शिकंजा कसा जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। My question to dear delegates, I'm just breaking open the ice here. I'm just opening the session, and then the dice goes to you. So just start thinking of your questions. It's just a nice breaking session on my side. Just answer. What aspects of Patel's vision do you think are missing or need to be reinforced? Because you were talking about plenty of them. So in today's youth as well as the higher education. बहुत सारे लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो चिंतित ने ये जी नीति आई है, हले हले सानू थोड़ा जिहा डर लग रहा है कि पता नहीं साडे काम की है या नहीं है। लेकिन तुसी अगे अगे देखोगे कि जिहड़ा दुनिया सानू कह रही सी ना कि साडा ग्रेजुएट किसी काम का नहीं है, साडा 10वीं तक पहुंचते बच्चे को कोई काम करने का तरीका नहीं है, तो ये पॉलिसी 6वीं तो लैके वोकेशन स्किल की गल करती है। हमें मुश्किल लग रहा होगा कि साढ़े को टीचर नहीं है, साढ़े को संस्थावां नहीं हैं, साढ़े को स्किल वाले लोग नहीं जिहड़े सिखा सकन। लेकिन तुसीं आने वाले 5 साल 10 साल दे विच देखोगे स्कूल एजुकेशन तो लैके जिहड़ा साडा बच्चा ग्रेजुएट तक निकल के जाएगा दुनिया दे विच या मार्केट दे विच, वो बहुत ही कम का बंदा होगा, उसकी डिग्री बहुत कम की होएगी। हुण सानू लगदा कि ग्रेजुएशन तो बाद बच्चा जांदा उन्होंने कोई फैक्ट्री वाला तक नहीं रखता। हुण जिहड़े करिकुलम्स बन रहे हैं यूनीवर्सिटीज़ दे विच स्कूल दे विच वो उन्हां जिहड़ी एक्सपीरियंशियल लर्निंग कह रहे हैं ना, अनुभव नाल लए हुए ज्ञान नूं उन्होंने लैके बनाया जा रहा सिलेबस है। सानू हुण एक कंपलसरी हो गया कि असीं इंडस्ट्री वाले नूं या साडा अगर जिवें कानपुर की मैं गल करां तो चमड़े का काम चलता है, तो चमड़े वाले काम करने वाले लोगों नूं भी साडी उस जिहड़ा पैनल हुंदा है जिन्हों असीं सिलेबस बनाने की कमेटी कहने हैं, उहदे विच उहदा रोल देना पैना है, क्योंकि उस इलाके का की कुछ सवरना है वो बहुत जरूरी है। तो जिहड़े करिकुलम्स ने या जिहड़े आने वाले वक्त ने बड़े पॉजिटिव ने साडे उन्हां इंडस्ट्री वास्ते भी, साडे यूथ वास्ते भी, साडी डिग्री कोर्सेज वास्ते। कोई चिंता करने की लोड़ नहीं है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है, इंडिया बड़ा स्पीड नाल चल रहा है, उनकी स्पीड को पकड़ने की कोशिश करेंगे आप। Thank you sir, thank you so much. Sir and Varun sir. Since basically you both of you were talking about cultural ethos also, and plus that's your expertise. Secondly, you belong to that group where there are maximum students also, like students taking pol science and history, we have a good number. So question for you, that is there a risk that we lose cultural and ethical foundations in this technology driven world, because the world is going so fast? How can we balance between the two? And how can today's youth be empowered to lead with the values of Patel? I think there is a moral education course in schools also. Yes, sir.
बच्चा तो ऑलरेडी अपने कल्चर से तो परिवार के साथ ही कनेक्ट होता है। इवन कि आप देखोगे अगर पीजीआई है तो पीजीआई में भी कभी कहीं सोशल साइंसेस कोर्सेज शुरू किए गए ताकि बच्चे को जो लिबरल आर्ट्स है, सॉरी डॉक्टर्स को जो लिबरल आर्ट्स है उनके बारे में पता चला जाए। सो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा कि जिससे स्टूडेंट्स जो है वो कल्चर वैल्यूज को खो देंगे। इवन कि बाबा सर ने कहा था कि अगर हम मल्टी डिसिप्लिनरी की तरफ जा रहे हैं तो अगर कोई साइंसेज वाला बच्चा है वो साथ साथ वो लिबरल आर्ट्स में पढ़ेगा। तभी जैसे स्ट्रीम आ गया अब सो STEM या वो STEam। बैलेंस मेंटेन है। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। Sir, anything you would like to add? very happily with that, but जैसे कि मैं एक एग्जांपल में देना चाहता हूँ कि मेरा 48 स्पेशलाइजेशन डॉक्टरेट इन ह्यूमैनिटीज स्टडीज में है। तो 1950 और 60s की अगर मूवीज देखें बेसिकली और 40s से भी अगर शुरू हो जाए बेसिकली, तो आवर लीडर्स वर वेरी मच कंसर्न किस प्रकार का सिनेमा, किस प्रकार का थिएटर हम लोगों को देखें। आज वो बात नहीं होगी। Yes. जब वो बात होगी तो ज्यादा फैक्टर से होगी, क्योंकि विजुअल का जो प्रभाव पड़ता है वो और चीजों का नहीं पड़ता। क्या आज दो बीघा जमीन प्यासा या मदर इंडिया बनाने वाले फिल्मकार नहीं, तब बनी थी, उनमें से एजुकेशन निकल कर आई। ये मेरा एक थीसिस है, मेरा रिसर्च इसी पे बेस्ड है कि एजुकेशन उस अकेला एंटरटेनमेंट कभी भी नहीं कर सकेगा। पंडित नेहरू बहुत चिंतित होते थे जब पहला यहाँ पर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करवाया गया कि आई वांट यू पीपल टू हैव अ मीनिंगफुल सिनेमा। तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नुक्कड़ नाटक हो, वैसे नाटक हो या एक सार्थक सिनेमा हो, तो वो एक पर्सनैलिटी को डेवलप करने में बहुत हेल्प करेगा। और मॉरल वैल्यूज की बात हुई थी जैसे उसमें की, तो आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग दैट कि उसको हम रिलीजन से जोड़कर देखते हैं, नो डाउट दैट, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल को ओबे करना है कि आपको कोई रिलीजन है, तो दैट इज आल्सो एजुकेशन, दैट इज पार्ट ऑफ योर एजुकेशन। हो सकता है बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, बिल्कुल ये एक बैलेंस चाहिए कल्चर और एथिक्स। यस, थैंक यू सर। Varun sir, another question for you, since you're a teacher activist and we all know you well by that only. So, and also Baba sir in his discourse mentioned that Sardar Patel was a rightist. That is basically what I could get being a non-history student, that for a nation was more important. So how can we create Patel-inspired leaders in today's world? Patel has made the farmers. Okay, sir. Farmer leaders. Yes. And पंजाब में सबसे बड़ा इशू है एग्रीकल्चर क्राइसिस। Yes. सो जो ट्रू स्पिरिट है वो लीडरशिप में भी कहीं में कमी है। पंजाब में 2020 में फार्मर मूवमेंट हुई थी, वो इतनी सफल रही थी। पिछले साल क्या हुआ तो हम सब कुछ पता है। सो पटेल का विजन वहां पर जरूरी है। पटेल फॉर द कॉमन मैन, तो जो फार्मर गरीब था उसके लिए लगा। तो पंजाब में जो फार्मर्स है उसकी कई कैटेगरीज है। सो पटेल का विजन यहाँ पर रेलेवेंट है। Thank you, sir. Thank you. My question to the administrators and to Professor Mansingh together and to all the panelists. You think Sardar Patel would have, like he would have, would he have preferred privatization in higher education? Actually, I have not read about much about Patel, but I know that there are our education systems today. Yes, sir. I think it is the contribution of that old man. Yes, sir. But after that, we have confused the education so much because there are so many institutions. Nowadays, I have been in Greenwich University Agriculture College. Last week, we received one notification. Okay, sir. That every graduation course should have 2 credit hour course on entrepreneurs. That is from the Bihar government. Okay. So Roy Chandran made me the convener of that committee. Thanks. I called the meeting of all the deans and rectors. There are 14 colleges under the university. So just imagine, in case of agriculture, we are getting guidelines from the ICAR. Yes, sir. Syllabus is fixed, credit hours are fixed.
Now UGC have guided that at least 4 MOOC courses are to be introduced and some other SWAM courses. Yes, SWAM and that. Now the Punjab government is guiding that 2 credit hour courses should be included in this compulsory mandatory. So I don't know what they are willing to do. If we are adding a course, then most of the especially the BTech and veterinary, they said how we can add these courses to our mark sheets in our degrees, because they are not, institutions are not allowed. ICR is not allowed, medical institutions are not allowed. So I think we have to conclude this education system with the policies or with the institutes much more as compared to that. They have built a very good system. We put it into the curriculum, but the outcome is not, No. I mean, that's. After 78 years, just we are not decided that what information, what education, what type of training the students are doing. Yes. You just imagine. Exactly. China has got independence 2 years later than us, but now they are actually number 1, but somehow they are considered as number 2. Just imagine few days back there was a report. Okay, India has 4th position as far as the income equality. Very 3 small countries are ahead of India. India is at number 4. I was shocked that inequality in India is too much, income inequality. How? Then I find out that what's the methodology they use. They use the consumption rate. Right. From the person who's getting salary of 100 rupees per day, he is also taking 3 times a week. And the millionaire, he is also taking it. Little bit difference may be there. Food consumption is the same. So our country is just manipulating the data and taking all these things in favor or whatever you call it. But actually we are missing what the Dr. Patel, Mr. Patel and those people and Gandhi things. Exactly. That is, Baki myself is an old alumnus of this B.Ed college. Yes. I done my B.Ed in 79 from B.Ed college. Then I moved to Shimla for M.Ed, then I shifted to PAU for PhD. I retired in 2015 at the age of 60. Then I done some international projects, then director in Bhutan of colleges. Now I'm dean in him. So I have a vast experience of international, private, and government institutions. The hurdles are created in implementation. Policies are very good. Policies. Yes, sir. Thank Yes, sir. Thank you, sir. Dr. Pargat, would you like to add something to the discussion? जिस तरह सर ने लास्ट में एक बात कही है कि policies are very good. So we Indian are very much famous to not to implement policies on ground. 1964-66 Commission has also said that even the best of the curriculum are bound to fail unless or until quickened into the life by the teachers. Then ultimately the responsibility comes on the shoulders of the teachers also. CC was wonderful contribution to Indian school education, but we can't understand the concept of continuous comprehensive evaluation. Eventually it failed. Then when we are talking about the NEP 2020, now the new national curriculum framework is in a public domain, National Curriculum Framework 2023, which is talking about all these things from the school education. जिसके हम लैंग्वेज फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, 9th तक कितने 3 लैंग्वेज कैसे डिसाइड होगी, +1 +2 में 2 लैंग्वेज कैसे डिसाइड होगी, मल्टीलिंगुअलिज्म की बात कर रहा है, यूनिटी की बात कर रहा है, देन वोकेशनल एजुकेशन को ब्यूटीफुली उसमें डिजाइन किया गया है. Now the responsibilities on the administrators, the principals, then teachers, then parents, all the stakeholders. We can't play over with the policies. We can't play over with the leaders, the political leaders. Once the policy has been framed, it may have some good points, it may have some points for improvement, but we need to understand that policy. We need to implement that policy in our institutions, like 2 credit courses or the other group courses. All these things can enrich the experience of the student. As one of the panelists was saying that, ਅਸੀਂ doctors and engineer करने produce नहीं करते, ਅਸੀਂ doctors human doctor भी produce करते हैं.
ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਲਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇਨ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ ਹੁਣੇ ਕੱਲ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੀਸ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਸਪਿਰਿਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪੀਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਆਰਮਸ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਰਸ਼ੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਿਗ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਮਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਐਟ ਅ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਐਟ ਅ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਐਂਡ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਐਟ ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਬੰਬ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ well educated in the value system of the India ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਸੂਦੇਵ ਕੁਟੰਬਕਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਾਸੂਦੇਵ ਕੁਟੰਬਕਮ ਦੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ we can get maximum from that curriculum for our students. Thank you. It is a diary we need to prepare. Thank you, sir, please. ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ original ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ being a rightist it doesn't mean that you are favoring the privatization. Yes, sir. Privatization is a new phenomenon. Privatization 90s ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਟੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ he is not a far rightist. Yes. There is a difference. Yes. Even ਕਿ ਤੁਸੀਂ far rightist ਸ਼ਾਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓਗੇ even that time ਉਹ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਬੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ ਬਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੀ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਟੇਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ So मेरा question being a science student see because it's easy nahi. Audience. Yes. Now the floor is open for the audience. May I request the audience to put your questions? Yes. Anybody? Sir, it might not be a question. I'm just adding up to the answer given by Dr. Bhavan. Sir, you talked about the provision of some co-curricular activities like music, drama, etc. In some very rigorous professional courses like NEET is there or engineering is there. So yeah, I feel that it should be there because जो हमारे बच्चे हैं, जैसे my son is also studying, so उसमें क्या है? Sir, they themselves don't know what is the healing power in these co-curricular activities. That's just one. If you have music in your curriculum, how is going to heal you? You don't know. So I think this part must be made compulsory from the institution only, from the the affiliated body only, so that they can pursue this. And it is, you know. Just one addition, yeah, I quite agree with you. But in some, you can say, strict words, and I will say that what questions will come in JE or NEET or any other competitive exams, it is decided by coaching centers. By coaching centers. We have to remove that feeling. The student has to come into the classes. They should not have any dummy classes for 11th and 12th. Only then good students will. So besides that, like they've said that in +2 you can take some other subjects, but when the student has to go for the competitive, like instead of physics, a student takes music, but how is he going to compromise with the physics portion in JE? That is the main thing. Secondly, as just add up, like we said, we have accredited courses.
this I think I'll be talking on behalf of my students because I am a mother myself. So engineering and other courses have started with some community engagement and all. When it comes to taking for the students, they will say, "इसकी marks तो degree में add नहीं होने, क्या करना है? 2 हफ्ते की जगह हफ्ता चले जाते हैं, certificate तो मिल जाएगा." क्योंकि I think, ma'am, from the students level, they are more bothered about what credit are they getting. No doubt they'll be learning. When they go, they will learn. But उनको कहीं ना कहीं outcome जो है credit form में वो demand करते हैं. मार्क्स के अलावा जो क्लिनिक कवर से नाम होगा, मार्क्स आर नॉट एवरीथिंग बेसिकली। वो जो डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे ना, वो बहुत बड़ी बात है। सर ये हम समझेंगे, पर वो थोड़ा सा भी उस लेवल पे इसीलिए क्योंकि कंपटीशन बहुत रिगरस है एंड मार्केट इज बीइंग ड्रिवन बाय कोचिंग सेंटर्स, दैट हैज टू बी स्टॉप्ड। Yes. So, assuming that there are no questions from the audience side, thank you all the panelists for sharing your insightful insights. Today's conversation reinforces that Patel's vision is not a relic of the past, but it is a living framework for building a just, unified, progressive nation, which can be done through education, and especially through higher education. So with this, Thank you, ma'am. Thank you so much. So now, as a token of our gratitude, we would like to felicitate our respected speakers for their enlightening sessions. So may I request our worthy principal, Dr. Palgat Singh Garcha, to facilitate our speakers. Yes. May I request Dr. Raman to kindly proceed. Dr. Baba, Dr. Rakesh. Sir, please. How do you please? Thank you. Please. I'm not saying. Dr. Varun Goyal. Professor Latika Sharma. Dr. Jaspal Singh. Dr. Man Singh too. Thank you so much, everyone. So with this, we conclude the morning session and Proceed for lunch and tell about the big plans. so afternoon session will begin after lunch, so which will include online and offline presentations. So I request everyone to kindly proceed for the lunch, and we will meet at 2:30 sharp. Offline presentation will take place here only in the seminar hall.